Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A fifth suspect has been arrested in connection with a violent cross-border intrusion in Meghalaya's southwest Khasi Hills, where an armed gang from Bangladesh stabbed a man for allegedly trying to block their movement inside Indian territory. Police confirmed that the latest arrest brings the total number of accused in custody to 5. The arrest stemmed from a major cross-border incident reported on August 8, 2025. During the intervening night of August 7th and 8th, armed intruders stormed a shop in Rongdangai village, taking Shri Balsrang Marak hostage and moving him towards New Rongdangai. The victim escaped into a house, locking the door, but the assailants chased him, banged on the door and fired multiple rounds before forcing entry and assaulting him. Later that day, a quarry owner reported the presence of armed miscreants near Khonjoy. The Nongyalam police station officer in charge rushed to the scene, but the suspects fled into the forest despite warning shots. Recovered from the area were weapons, tools, communication devices, identification papers, Bangladeshi and Indian currency, medical prescriptions from Bangladesh, and micro-explosives. The following day, villagers of Khonjoy B captured one suspect identified as Mehfuz Rahman of Kamilla, Bangladesh, and handed him over to the police. A subsequent joint operation by police and BSF in Chibak forest led to the arrest of 3 more suspects: Jahangir Alom of Jamalpur, Merupur Rahman of Jamalpur, and Saim Hussain of Narayanganj, all from Bangladesh. In Manipur, security forces have arrested 6 militants from 5 banned outfits over the last 2 days in Bishnupur, Imphal West and Thubal districts. On Friday, police detained a woman cadre of the Kanglai Park Communist Party from Chingmerong and another cadre of KCP-MFL from Haubam Marak accused of aiding extortion activities. On Saturday, 2 KCP Apunba members were held in Payang for threatening schools and collecting money. In Thubal district, a Kanglai Yawol Kanal Loop member was caught with a grenade linked to extortion and kidnapping. Another arrest in Thangtek saw a pre-packed PRO cadre held for targeting businessmen. AIUDF General Secretary and MLA Hafiz Rafiqul Islam along with MLA Ashraful Hussain addressed a press conference on Sunday at the party headquarters in Hatigao, Guwahati on issues including eviction drives, allegations of harassment and the special intensive revision of voter lists. Hafiz Rafiqul Islam accused the Chief Minister, who also holds a home portfolio, of failing to maintain law and order in Assam, alleging that he is instigating goons to harass bona fide Indian citizens, including laborers and lawyers in different districts. He said the constitution grants Indians the right to work anywhere in the country, but in Assam people are unsafe even when moving between districts. He demanded the CM's resignation and called for president's rule in the state. On the eviction drives, Islam claimed they were being carried out without rehabilitation and targeted Muslims under the guise of identifying foreigners. He said the CM was creating a false narrative for electoral gain, adding if they were foreigner, arrest them and prove it. But the CM knows very well there is not a single foreigner here. He alleged that displaced families have lost access to housing, schooling and basic rights and urged the judiciary to intervene. देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में वो बिल्कुल नाकाम है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और वो खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं। कुछ गुंडों को उन्होंने रोड पे छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया, बोनाफाइड भारतीय नागरिक को बराबर हैरेस कर रहे हैं वो लोग। अपर असम में आप लोग जानते हैं, लोअर असम के जो व्यवसायी है या जो लेबर किस्म के लोग हैं वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनको किसी को मारपीट किया, किसी को भगाया, अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। तो अपने ही स्टेट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग महफूज नहीं है, उनका वहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, पुलिस वाले कोई सुनने वाला नहीं है। तो भारत के नागरिक एक स्टेट से अपने कंट्री के किसी भी जगह जाके वो काम की तलाश में जा सकते हैं। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार भारतीय नागरिक को दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है आसाम के लिए, एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में जाके महफूज नहीं है, एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में जाके वो गुंडों के से टॉर्चर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री साहब उसको समर्थन करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस तरह के इंस्टिगेट कर रहे हैं और इन लोगों को हैरेस कर रहे हैं। इसलिए हमारा दावा ये है, हमारा कहना ये है कि मुख्यमंत्री रिज़ाइन करे और आसाम में राष्ट्रपति शासन बलवत्त होना चाहिए, ये पहला डिमांड है। और यहाँ कॉन्स्टेंट इवेक्शन हो रहा है, आप लोग जानते हैं, बोनाफाइड भारतीय सिटीज़न है, उनको रिहेबिलिटेशन ना करके इवेक्शन करना बिल्कुल हम इसके खिलाफ है।
और मुख्यमंत्री साहब एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग संदेहयुक्त हैं, ये लोग विदेशी है, झूठ फैला रहे हैं। झूठ फैला के भारतीय नागरिक को हैरेस किया जा रहा है, उनको इवेक्ट किया जा रहा है। एक भी विदेशी भारतीय नहीं है। अगर ये विदेशी होते आप उनको इंक्वायरी करके क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करते आप? वो कहाँ का है? पाकिस्तान का है, बर्मीज़ है, या थाईलैंड का है, या चीन का है, जापान का है, पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहाँ का है? आप ये बोलिए ना। लेकिन मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री खूब जानते हैं कि एक भी विदेशी बांग्लादेशी नहीं है। मुसलमान होने की वजह से इनको जुल्म किया जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री का चूँकि सामने इलेक्शन है, भोखलाहट है उनको। अब पोलराइज करने के लिए मुसलमान को अत्याचार करके वो हिंदूज के वोट को लेने के लिए खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री साहब अपने कुर्सी का गरिमा तोड़ चुके हैं। उनको इस कुर्सी पे रहने का बिल्कुल हक नहीं है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। आप जिन लोगों को इवेक्ट किया है उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, आप कहाँ जाएंगे, किस कॉलेज में जाएंगे? उनको वहाँ से भगा दिया, वो रोड पे हैं। अब उनके पास ऊपर छत नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बच्चों से, स्टूडेंट से उनका एजुकेशन का हक छीन लिया, लोगों से उनका जीने का हक छीन लिया। मुख्यमंत्री का ये जुल्म हद से ऊपर कर दिया। इसीलिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप सो मोटो केस लीजिए और इन लोगों को रिहेबिलेशन का बंदोबस्त करने के लिए इस सरकार को कंपेल कीजिए। और मुख्यमंत्री जो ह्यूमन राइट्स छीन रहे हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का राइट छीन रहे हैं, इसके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करे, ये हमारी कहना है। तीसरी बात ये है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का जो बिहार में चल रहा है, आसाम में भी उसकी प्रस्तुति चल रही है। आसाम इलेक्शन कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ऑलरेडी लेटर देके उन लोगों को सूचित किया है कि ये जल्दी ही ये काम शुरू करेंगे, SIR का काम शुरू करेंगे। हम इसके खिलाफ है, कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि आसाम में आप लोग जानते हैं कि NRC का काम हुआ है, 15 से लेकर 19 तक 5 साल लोगों ने अपना सब कागजात इन लोगों को जमा किया और 66 का वोटर लिस्ट, 51 का NRC, 71 का वोटर लिस्ट और लोगों का लैंड रिकॉर्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा किया। उसको फील्ड लेवल पे वेरीफाई किया है, ब्लॉक लेवल पे उसकी वेरिफिकेशन हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन हुआ, स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों का नाम NRC पे आया। अब NRC होने के बाद मैं समझता हूँ दोबारा इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लोगों को हरास करना होगा। और इलेक्शन कमीशन BJP का अभी पुतला हो चुके हैं। BJP जिस तरह यूज़ करना चाहती है इसी तरह यूज़ कर लेती है। तो हम इलेक्शन कमीशन से यही हम आपको आह्वान करेंगे, आप BJP के हाथ का पुतला मत बनिए। आप स्वतंत्र है, आप ढंग से काम कीजिए, लोगों को हरास करने का काम मत कीजिए। 24 में जो इलेक्शन हुआ है, जिस इलेक्शन के बिना पर आसाम के 14 सीटों में 11 सीट BJP दखल करके मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये वोटर लिस्ट आपको पसंद नहीं है, वोटर लिस्ट पे अगर गलती है तो बोलिए मोदी जी रिजाइन करें, अमित शाह जी रिजाइन। Over the statement of the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, Congress MP Gaurav Gogoi questioned PM Modi of why he paused the war. Gogoi also said that the Election Commission of India is only hurting its own reputation by not showing the facts and coming out transparently to the people of India. No, the question remains that why did Prime Minister Modi pause Operation Sindoor? What concessions did he extract? Did he, we remember 1971, the Pakistani armed forces surrendering. We've all seen that famous picture where they surrendered and they handed over their weapons. But in this particular case, we want to know that on Saturday evening, during a special Naka checking at the Gorkhal toll gate, one vehicle was intercepted. During the search conducted of the vehicle, a total of 56 cartons of tripolidine, hydrochloride and codeine phosphate syrup, which is suspected to be controlled psychotropic substance, were recovered, each containing 150 bottles, totaling 8,400 bottles. Each bottle was of 100 milliliters, making the total quantity to 8,40,000 milliliters. Two persons, Lal Chuan Fela and Matthew Zonun Mauya, both residents of Aizawl in Mizoram, have been apprehended in this connection. Further legal procedures are being initiated in the matter, and seized goods are worth ₹50 lakh in the black market, informed SSP Kachar Numal Mahat.
In Guwahati on Sunday, women bikers participated in the Salute Birangana motorcycle rally ahead of Independence Day, celebrating women's contributions and honoring their achievements. The rally was attended by former MP Queen Oja Angurlata Deka, chairperson of the Assam State's Women's Commission, senior journalist Pranoy Bordoloy, and hundreds of women riders. The bike rally began from Sarusajai in Guwahati, proceeded towards Biharbari, and concluded back to Sarusajai. Independence Day উপলক্ষে এইটো রাইড কৰিছো so salute to all biranganas thank you so much let's ride guys thank you chance asal আমি লৈছো হে দিয়া নাই মই আমাৰ বিকাশ আছে মই বিকাশৰ দৰকাৰ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো কৰি আছো যেতিয়াও আমি ক'বাত ৰাইডত যাওঁ লাডাখ ৰাইড হওক বা কন্যাকুমাৰী ৰাইড যি ৰাইড গ'লেও মানে দাদাই সদায় আহি ছাপোৰ্ট কৰে সেইটো কাৰণে মোক সদায় ভাল লাগে কেতিয়াও দাদাই না বুলি কোৱা নাই আজিলৈকে যিমান ৰাইড গৈছো সদায় আহি পেলাই কিবা না কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে এনেকৈ কৰিবা সেনেকৈ কৰিবা আপুনি এটা কথা ক'ব পাহৰি গ'ল আপুনি এভাৰেষ্টটো গৈছে While talking with media, Deka shared that in Operation Sindoor, they have seen two female heroes, Bhumika Singh and Sophia Qureshi, along with many other Viranganas serving the country. They salute all of them through this rally. This event aims to inspire the youth in villages to cultivate patriotism and work for the nation. इंडिपेंडेंस डे 15 को है लेकिन हम पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं और थीम हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुली हुआ था वो भी वुमेन ने किया था तो उनको सैल्यूट देने के लिए आज ये रैली निकलेगा ऑल असम से लोग आए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है और इसमें मेन वुमेन लीड करेंगे पूरा रैली को और ऑब्वियसली बॉयज भी रहेंगे साथ में ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा है कि दो हमारे फीमेल टाइगर ही बोलूँगी उन लोगों को भूमिका सिंह जी और सोफिया कुरैशी जी और उन दोनों वीरांगनाओं के साथ हमारे जितने भी देश के सेवा में लगे हुए हैं वीरांगनाएं सभी को सैल्यूट करके एक बाइक रैली हम लोगों ने आयोजित किए हैं और हमारे अवेयरनेस का यही एक मतलब है कि हम लोग ये जो दो वीरांगनाएं हैं और जितने भी वीरांगना हैं उन लोगों से प्रेरित है और आगे जाके हमारे गांव में रहने वाले सभी युवती देश की सेवा में लगे उनके मन में देशभक्ति का एक मन में जागृत हो और उन लोग मानसिक रूप से शारीरिक रूप से शक्तिशाली रूप में देश की सेवा में आगे बढ़े काम करे यही सोच के हम लोगों ने ये बाइक रैली किए हैं और ये बाइक रैली में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फीमेल्स बाइकर्स हैं सबका सहयोग चाहते हैं और काम में हमेशा युवती के सबलीकरण के लिए हमेशा After the Chief of Air Staff credited the political will of the central government for the success of Operation Sindoor, Bharatiya Janata Party leaders have sharply criticized Congress MP Rahul Gandhi for what they call pushing a Pakistani narrative and berating the armed forces through false claims made in Parliament. During a special discussion in the monsoon session, Rahul Gandhi alleged that the centre had tied the hands of Indian pilots by instructing them not to attack Pakistani air defence systems. However, Air Chief Marshal A.P. Singh refuted this, stating that the success of Operation Sindoor was due to clear political will, full freedom for the forces to plan and execute operations, and the absence of any imposed restrictions. He clarified that any operational constraints were self-imposed decisions by the armed forces to control escalation. Assam CM Himanta Biswa Sarma said the Congress should hang its head in shame, accusing it of spreading lies about India's military operations and amplifying disinformation originating from Pakistan. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also hit out at Rahul Gandhi, urging him to maintain the decorum of Parliament and accusing him of repeatedly making false statements that harm India's global reputation. Both leaders shared a video of the Air Chief's statement directly countering Gandhi's claim. I can say what were the reasons for success. One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were
self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated. External Affairs Minister S. Jaishankar has spoken with Armenian Foreign Minister Arafat Mirzoyan to congratulate him on the signing of the Armenia-Azerbaijan peace accord finalized on Friday in Washington, D.C. Jaishankar called the agreement an important achievement for dialogue and diplomacy, principles that India strongly supports. The accord, brokered by the U.S., ends decades of conflict between Armenia and Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh region. U.S. President Donald Trump hailed the deal as a major diplomatic breakthrough that will enhance stability in the Caucasus and open opportunities for trade and investment. At the signing ceremony, President Trump described the peace as the end of 35 years of hostilities, expressing confidence that Armenia and Azerbaijan will remain friends for the long term. He said the new transit route will give Azerbaijan full access to Nagorno-Karabakh while respecting Armenia's sovereignty, and announced U.S. plans to develop the corridor for up to 99 years. Azerbaijani President Ilham Aliyev assured there would be no reversal of the deal, promising long-lasting and eternal peace in the region. President Trump, speaking alongside Armenian Prime Minister Nikolai Pashinyan, and President Aliyev, said his highest aspiration is to bring peace and stability to the world. He also recalled a previous diplomatic success, noting that India and Pakistan stepped back from the brink of what he described as a potential nuclear conflict through constructive leadership. Prime Minister Modi on Sunday flagged off the yellow line of the Bangalore Metro line and took the inaugural ride, accompanied by Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy CM D.K. Shivakumar. Union Minister Manohar Khattar and BJP MP Tejasvi Surya also accompanied them. While addressing in the program, PM Modi said that till 2014, there were only 74 airports in India. Now their number has increased to more than 160. The figures for waterways are also equally impressive. In 2014, only 3 national waterways were operational. Now this number has increased to 30, he said. पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। साथियों, जल, थल, नभ कुछ भी अछूता नहीं रखा है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है।
नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to HornbillTV.